वो बाज़ औक़ात बहुत बड़ी हो जाती हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हस्बैंड एंड वाइफ का अगर कोई झगड़ा हुआ है आपस में और वाइफ ने पुलिस कॉल कर ली या किसी ने पड़ोसी ने या किसी ने भी 911 कॉल कर लिया और पुलिस इन्वॉल्व हो गई और वो बंदे ने कभी आज तक अपनी बीवी को कभी फूल से भी नहीं मारा था, कभी डांटा भी नहीं था, लेकिन एक वक्त आ गया, गुस्सा आया, लड़ाई झगड़ा हुआ और डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। अब उसमें जो तकलीफ़ होती हैं, या अगर वो सुबह उठ के चाहें कि अगले दिन जी कल गलती हो गई और आज जो है ना ये तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, कोई मायने नहीं रखती है, बस हमने गुस्से में कह दिया था, लेकिन उस वक्त हाथ से चीज़ें निकल चुकी होती हैं। जब पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर ये क्रिमिनल केस बन जाता है। और आज इसके लिए हमने मिस जेफ को अपने ऑफिस, हमने उनको एक कर्टिसी, हमने उनका एक इंटरव्यू रखा है कि मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसको फिर मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूंगी और कम से कम आज हम अपनी कम्युनिटी को ये अवेयरनेस देना चाहेंगे कि अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है या अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह हो जाता है तो वो कितना सीरियस होता है। तो हम इनवाइट करते हैं हमारे बहुत ही अच्छे सीनियर लॉयर मिस जेफ, जो कि हमारे ऑफिस में आज मौजूद हैं। इज ही देयर? हाय जेफ, हाउ आर यू? कैन यू हियर मी? Yes, I do. Hi. Now can you hear me? Yes. Okay, so I just explained that how serious is the domestic violence, and I said that sometime people, husband and wife, just they fight and they think this is nothing and they call the police, and when the police involved and they take the husband and do the arrestment, this is a very serious thing. So I just want to ask you, how serious is the domestic violence? Domestic violence in Canada is a very serious crime. It's a crime of violence, and that's the problem, and that's why we have to try to help as many people as possible to avoid getting any kind of criminal conviction for an act of violence. Okay. It has a lot of effects on the average couple. Okay. If a person gets charged with domestic violence, namely assault, then there are several immediate consequences. Number one, they're not going to be allowed to have any kind of communication directly or indirectly with the complainant of the assault. Okay. Number two, they may be held for bail. So that's going to be a further restriction. Okay. And then the court system itself is a slow process. So it doesn't assist people getting back together as quickly as some couples may wish. So in that period they cannot live together. That's correct. Okay. A standard terms of a release for somebody who's charged with domestic violence would be no contact or communication, directly or indirectly, not to reside with the complainant. Okay. And sometimes to stay away from anywhere you know that they are, namely their place of work, school, or place of worship. Okay. So it is a very serious offense. Correct, with lots of serious consequences. जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं क्रिमिनल लॉयर और जिनके पास एक डिग्री है कनाडा की कि ही इज़ अ वेरी सीनियर लॉयर, उन्होंने हमें बताया कि अगर कोई ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है और चार्जेस लग जाते हैं तो सबसे पहले तो ये कि आपको वहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं होती, दोनों को साथ रहने की इजाज़त नहीं होती जहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ हैं और जहाँ पर ये कंप्लेन की गई हैं। नंबर 2, अगर अरेस्ट हो जाते हैं तो उसके लिए बेल चाहिए होती है और बेल के लिए प्रोसेस है जो कि मैं जेफ से आगे चल के क्वेश्चन करूँगी। और दूसरी बात ये कि ये इतना सीरियस वायलेंस है कि अगर बंदा चार्ज हो जाए तो आपकी इंडिविजुअल ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, दोनों अलग भी हो सकते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा मुसीबत भी उठा सकते हैं। और जैसा कि जेफ ने कहा कि कोर्ट का प्रोसेस बहुत स्लो है, तो ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई झगड़ा जो आपका शुरू हुआ डोमेस्टिक वायलेंस का आज शुरू हुआ और आप समझेंगे कि हफ्ते 2 हफ्ते में ये ख़त्म हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म में चलता है, 6-6, 7-7 महीने, बहुत अरसे तक भी चलता है। और उसमें वो तमाम तर चीज़ें जो आपके लिए रोज़मर्रा की चीज़ें थी, साथ रहना, साथ ज़िंदगी गुजारना, बच्चों को देखना, वो सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम हुई है तो हमारे आज के पूरे प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू जेफ, इफ़ द पर्सन इन्वॉल्व इन द डोमेस्टिक वायलेंस एंड पुलिस अरेस्ट देम एंड दे डोंट हैव एनी फ्रेंड और फैमिली टू गेट द बेल एंड दे कॉल यू, व्हाट इज़ देयर राइट्स, व्हाट दे कैन डू, हाउ कैन यू हेल्प देम? There are several ways that they can be assisted. Obviously, the best way would be if they have a friend or family member
or even a colleague at work who is prepared to step up and assist them to get bail, meaning to get released. And then there could be various conditions attached to that release. But going back to your question, whether a person does not have friends or family in the country, there are other ways to get released. You can apply to be released through the assistance of what they call the bail program, meaning that there's a government organization that will monitor you and ask you to possibly check in with them once a week just to make sure that you're obeying any of those restrictions that we were talking about. So the answer is yes, they can get the bail. They can get released, yes. ओके एंड जैसे कि जेफ ने कहा कि अगर आपके पास कोई फैमिली और फ्रेंड नहीं होता, क्योंकि आपको बेल के लिए जाहिर है किसी की कोई गारंटी कोई लेता है आपकी कि आप अवेलेबल रहोगे, कोर्ट की डेट्स पे आओगे, आप कहीं जाओगे नहीं, और ये तमाम तरह अगर कोई गारंटी लेता है, और अगर आपके पास कोई फ्रेंड और नहीं है, कोई आपका दोस्त नहीं है या कोई रिश्तेदार नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपका लॉयर आपकी हेल्प करता है और एक प्रोग्राम होता है जिसके तहत आप बेल ले सकते हो. जेफ, माई नेक्स्ट क्वेश्चन is that sometimes it happens that husband and wife, they are just fighting, they are very emotional, and wife pick up the phone or husband pick up the phone and they call 911 and one person arrest, and next morning the wife realized that, oh my god, why I should do that, she regret, and she said to the system or the court, I'm sorry, I just did the mistake, I don't want to arrest my husband, release him. Is it possible? The short answer is no. Unfortunately, when these things happen all the time, my firm, we deal with these kinds of stories that you just described every day. Unfortunately, in other countries, you can call the police and they may arrive at your residence to talk everybody down and calm the situation down. That's not the way it works here. If the police are called, somebody is getting arrested. There are ways within which the spouse can help, but it's not up to him or her to say, I don't want any charges to be pressed. Okay, and last question is very, very important that I think that our community has no awareness about that. When we said that domestic violence, it understand that it happened, the fight in the house and the problems. But when we say that sexual assault, that it's sexual assault that you can do on the work or something. But when the husband and wife involved in an accident, in that cases also I saw that the police pressed the charges that assault and sexual assault. So what is that? That in husband and wife, how can be it possible that the sexual assault? Again, that happens very often, and we hear of these stories all the time here at the office. Listen, in Canada, the law is quite clear. Any unwanted touch, if it is in a sexual nature, is considered to be sexual assault. Okay. Now that can happen between husband and wife, husband, wife, regardless of the relationship. The law states that no means no. ओके और इसका मकसद ये हुआ कि अगर इवन दो अगर आपकी वाइफ भी है और अगर वो कहती है कि अनवांटेड उसको टच नहीं चाहिए और अगर आपने उसको टच किया और पुलिस जब आई तो उसने कहा कि इसने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ा था या इसने ज़बरदस्ती मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की, तो ये भी एक सेक्सुअल असॉल्ट के ज़मरे में आ सकता है. तो हमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी है कि जब पुलिस का मामला आता है, जब या इन चार्जेस का मामला आता है, तो ये बहुत नाजुक है. एंड आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू यू एंड ऑल्सो जेफ आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट व्हेन द पीपल कम टू यू एंड everybody doesn't have the money, and in these cases the people have lot of problem. So fees wise you will get upfront, or how your procedure, what is your procedure? The way my firm works is that we price ourselves so that we can try to help as many people as possible. So what we do is we take a deposit up front, and then anybody can make monthly payments to pay off the balance. Okay, and the last question, how long usually it take to finish these cases? When it comes to domestic type of cases, it really depends on the situation. Because let's say in a story like you were describing, you have a domestic situation where the couple regrets their decision to call the police and they really want to get back together as soon as possible. Okay. So then part of our job is to try to get it through the judicial system as fast as possible, but in a responsible way, because we don't want to start pleading clients guilty. Okay. The bottom line is we have to try to avoid getting a criminal conviction at all costs. And
we want to do what's best for the client at their house. So we try to move it along as quickly as possible through the system, but in as responsible a way as possible. Okay, I said that that was the last question, but now this question is the last question. Let's say that if they have kids in the house, husband and wife, they are fighting, police come, arrest the husband, and the kids are sleeping in their room. It will be how it will affect to kids' life, or how it affect to the case? Well, that complicates things even more, because then part of those restrictions that we were talking about, once a person is released, that they're not allowed to communicate with their complainant directly or indirectly, or from going home, has a negative effect on the children. Okay. Because now you're not going to be allowed to see the children except through a mutually agreed third party, meaning the couple has to agree on someone. Okay, thank you so much, and I will explain as much as possible in Urdu. And if they, our community, I just give the awareness to them that they need a lawyer, and how important is the lawyer in all these scenarios. A lawyer is very important. I would not walk into criminal court without a criminal lawyer standing by my side. Okay, this is that how much is it important, because it's a criminal matter. So thank you very much, and hopefully that if we need you, our community, if they need you, they will trust you, because I'm with you, and we will provide all the information what they needed, and time to time I'll take your I need your awareness that you can come and give it to our community. Thank you so much. Thank you, Anjum. Nice to see you anytime. Thank you very much. اور جہاں تک ہم نے بات کی، یہ کتنا ایک ٹچی ایشو ہے، یہ بہت زیادہ ایک سیریس ایشو ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہم کہیں بھی اگر رہتے ہیں، کوئی مطلب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کہیں بھی ہم رہتے ہیں، اور وہاں ہم اپنی بیوی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، یا کسی بچے کو کھینچ کے مار سکتے ہیں، یا کسی پہ چلا سکتے ہیں. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پر اس سسٹم میں ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، لمیٹیشن ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ آپ کسی بھی قسم کے ڈومیسٹک وائلنس میں اگر آپ انوالو ہو جاتے ہیں، تو یہ چارجز بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں. یہ آپ کے بچوں پہ، آپ کی زندگی پہ، آپ کے گھریلو ازواجی زندگی پہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے جیسا کہ جیف نے کہا کہ جب آپ کو کوئی بھی ایسا پرابلم ہو جاتا ہے تو آپ کو لائر چاہیے ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ کرمنل میٹر ہے. اور جیسا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ کرمنل میٹر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، بیل ہونا ہوتا ہے، اگر کسی اور تھرڈ پارٹی نے بھی کال کر دی، یا فرض کیجئے کہ اگر کل آپ نے خود کال کی لیکن آپ کو نیکسٹ ڈے محسوس ہوا کہ میں ریگریٹ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ صرف ریگریٹ آپ کو ایک سیکنڈ میں ختم نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو ایک پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے پولیس کو انوالو کیا تھا. یہ چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہیں، پیشنس کی ہیں، کہ زندگی میں باتیں ہو جاتی ہیں، کیا ہمیں اس کو اس سسٹم میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے خوشحال رکھنا ہے اور ان چیزوں سے دور رکھنا ہے کہ پریشانیاں نہ ہوں. اب کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 416-570-0157. اور ہمیشہ میں لے کر آتی ہوں پرسنل انجری کا پروگرام، اور وہ آپ کا میرے ساتھ ہمیشہ جاری رہے گا. لیکن ایسے ہی دماغ میں آیا کہ بعض اوقات کال کر کے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ڈومیسٹک وائلنس کا اگر آپ کے پاس کوئی اچھا لائر ہو تو دے دیجئے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید ایک چھوٹا سا کیا ہوا پروگرام آپ کو ان چیزوں سے دور لے جائے کہ یہ معاملہ پولیس کا جب آ جاتا ہے تو چیزیں سیریس ہو جاتی ہیں. ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کس ملک سے ہیں، کس معاشرے سے ہیں، کس مذہب سے ہیں. اور ہمیں ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہاں پر چیزوں کو پریشانی میں ڈالنے کی بجائے اگر ہو سکے تو اس کو خود سالو کیجئے، گھر کو خوشحال بنائیے، مکان مت رہنے دیجئے، اس کو گھر رکھیے. زندگی رہی تو پھر ملیں گے.